that is the basic need for eat anything, that is the basic need in our human digestive system, because it is only and one part from that we taken our food. यानी कि ये सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अपने फूड को क्या करते हैं, टेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और हमें वो स्टमक तक पहुंचाते हैं. ठीक है. Why we do need food? Can someone answer this? Why do we need food या why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? Okay. Stand up. Growth and energy. Good. Sit down. And where do we get energy? Where do we get energy? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? Can anyone answer this? जानवी? Food से. Okay. Sit down. So basically we know that food is necessary for doing our activities or getting the energy in our body. It is clear for everyone? कि सबके लिए clear हो गया कि food हम क्यों खाते हैं? Food हम क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड से हमारी बॉडी में क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है. और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड एनर्जी? टू डू आवर डेली एक्टिविटीज, टू डू आवर डेली वर्क, टू डू आवर डेली थिंग्स, टू डू आवर रेगुलर वर्क. हमें अपने डेली के सारे काम को करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है. एंड वी गॉट एनर्जी फ्रॉम द फूड. क्लियर इट इज? सो द फर्स्ट ऑर्गन इज आवर माउथ. फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ. Mouth is the only part in our body where we can take in any kind of food. यानी कि माउथ जो है वो हमारा वन एंड ओनली ऑर्गन है जहाँ से हम अपने फूड को टेक इन करते हैं. Whether is solid, whether is liquid, whether is semi-liquid, whether is semi-solid, doesn't matter. Any kind of food we can eat from our mouth. It is clear? Now the second part is salivary glands. The second part is salivary glands. Salivary glands are present in our neck. Salivary glands are present in our neck. The work of the salivary glands is chew and swallow the food properly, and salivary gland produces saliva which breaks our food into smaller pieces. That means इसका मतलब हुआ कि जो सैलिवरी ग्लैंड क्या काम करता है, जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को क्या कर रहा है, वो चबाने में हेल्प कर रहा है और उसे स्वैलो को मतलब होता है निगलना, उसे निगलने में क्या करता है, मदद करता है. कौन? सैलिवरी ग्लैंड. कैसे मदद करता है सैलिवरी ग्लैंड? तो सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा नाम का एक सब्सटेंस निकलता है जो हमारे खाए हुए खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. क्योंकि अगर हम एक बार में बहुत बड़ा बाइट खा लेंगे तो क्या होगा, हमारे गले में फंस जाएगा, जिस वजह से हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है. इसलिए कहा जाता है whenever you eat chew very well. जब कभी भी आप खाना खाएं तो बहुत अच्छे से उसे चबा चबा कर खाएं. क्लियर? Now the third part is our food part. When we take the food into our mouth, we are chewing the food, saliva doing their work. Saliva break our food into smaller pieces or into smaller parts. Now we swallow the food like this. Now we swallow the food like this. The food comes into the food pipe. The food comes into the food pipe and goes to the stomach. What is the work of food pipe? Basically, the food pipe connects mouth to the stomach, and it is swallow the food into the stomach. Basically, जो हमारा फूड पाइप है उसका काम है हमारे चबाए हुए खाने को कहाँ तक पहुँचाना? स्टमक तक. Clear? Now we go to the stomach. Here is the digestion part. It will be started. In the stomach, the digestion part will be started. Due to substance that is called pepsin-like chemicals is present in our stomach. Due to this chemical, the food we
यानी कि यहाँ पे जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं। हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाए हैं। वी टेक सो मेनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, everything we take water that is in the come into the small intestine. When some nutrients are taken by blood, हमारे ब्लड द्वारा कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं. Now the undigested food goes to the large intestine. The undigested food goes into the large intestine. यानी कि डाइजेस्टेड फूड में जितनी भी अच्छी चीजें थी, जितने भी न्यूट्रिशंस थे, वो तो ब्लड द्वारा ले लिए गए, ब्लड की चीज में चेंज हो गए, कुछ एनर्जी में हमारे डेवलप हो गए. बट जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि ऐसा फूड जो स्टमक में प्रेजेंट पैक्सिन की वजह से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इट कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो कहाँ पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन. एंड नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन टेक्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है, उसने उस फूड में से क्या ले लिया? वाटर. The large intestine takes away water from the undigested food. Now the undigested food goes to the rectum. Rectum is also a part of our large intestine. It is also a part of our large intestine. What is the work of rectum? Rectum stops our undigested food or our waste product body from some time. यानी कि रेक्टम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वो जगह है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि अब उस फूड में कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं बचा है, उसको यहाँ पे रोक के रखता है. दैट इज कॉल्ड रेक्टम. एंड रेक्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ द पार्ट इज एनस. व्हेन द रेक्टम रिलीज द वेस्ट पार्ट, व्हेन द रेक्टम जब वेस्ट पार्ट को रिलीज करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करता है, इट कम्स टू द anus. It comes to the anus. It is our last point where the digested food will be released as a waste. It is clear for everyone? Okay. Now we will do the working for it. Okay. Thank you. Now we will take some practical work. How the food goes into from our mouth, how the food pipe comes into the stomach, where the food comes into the large intestine or where the food comes into the small intestine. Now we take a small lobe. It is a syringe. It is take like when we eat food. यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो आपको यहाँ पे इस पाइप के थ्रू पता चलेगा. ठीक है. Now we joint the pipe like this and push the water into the model's mouth. मैंने मॉडल्स के माउथ में पानी को क्या किया? पुश किया धीरे धीरे. अब ये धीरे धीरे देखिए, आपको दिख रहा होगा ना. It is comes into mouth, then food pipe, then stomach, then now rectum, now anus, and it is goes out from our body as like waste. It is clear? Okay. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Komal Verma. I study in class 7. This is a model of human digestive system. First is mouth. Mouth is the part of human digestive system where we eat food. Everything that we eat from the mouth. Next is salivary gland. Salivary gland chew and swallow the food, and salivary gland help to break the food into smaller pieces. How the salivary glands how the salivary glands break the food into smaller pieces? कैसे करता है? Salivary gland is produce saliva to break the food into smaller pieces. Good. Next, Janvi, come. Next is food pipe. Food pipe connect mouth from stomach, and food pipe is reaches food to stomach. Okay, go. Next, Ganesh, go. Now where is the food go? Stomach. Okay, explain. Digestion is start in stomach.
pepsin acid is present in stomach. Which chemical is present in stomach? Pepsin acid. Okay. And what is help? It helps to digest food. Okay. Now the where is the food goes? After food goes into small intestine. Okay. Digestion is finished in small intestine. It is finished in the. It is done. It is completed. After that, nutrition is absorbed by blood. Okay. Next, Chaman. Now where the food is go after small intestine? Small intestine nutrition absorb the blood and waste material through the large intestine. Okay. Large intestine absorb the water and through the rectum. What through the rectum? Waste material. Waste material. Okay. What is the rectum? Rectum also part of the large intestine. And what is work? Rectum works stop the waste material. Okay. What is the part of anus? What is the work of anus? And waste material remove the waste material. Remove the weight material. Okay, good.